So I'm sharing my screen. Okay, I think it's visible to you, everyone. Say yes or no. Yes, ma'am. Okay. Yes. So hardware part we have completed. So today we'll discuss or go through this software part. Okay, as the name implies, software. The software is nothing but the set of instructions or programs or some sequence of procedures or algorithms you can say, which gives commands to the computer what to do. So, in other words, these are the computer programs that provide a set of instruction to execute a user's command and tell the computer what to do, when to do, how to do such questions, right? So, the answer for this is certain programs, certain set of commands, certain set of instructions. You can say, for example, MS Word, Excel. If you want to, put your data in a tabular form or in some with some computation, calculation, or analysis, you can use certain set of instructions which we call MS Excel. MS Word, if you want to type or make some files or documents, then you use Word or PowerPoint representation. If you want to give your if you want to give presentation to certain institution or in your class or in conference, then you use certain feature of your ICT, that is or you can say the software, which is PowerPoint presentation software, a different set of instructions. So this chart below is about the classification of the software. There are different type of software depending upon their function, their need. तो जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली क्या होते हैं कि कुछ कहना चाहिए एक सिस्टमैटिक लैंग्वेज में लिखा हुआ इंस्ट्रक्शंस होते हैं या कमांड होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर भी होते हैं इनबिल्ट, जो कि मैन्युफैक्चरर बना के देता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको परचेज करने पड़ते हैं या कहीं से फ्री मिलते हैं, वो आप उसमें डाल सकते हो। क्यों डालना है उसको? ताकि आप कंप्यूटर को ये बता सके या कंप्यूटर समझ सके कि आप क्या काम करवाना चाहते हो उससे। तो ऐसा नहीं है कि सारे कंप्यूटर सब तरह की चीज़ें कर लेते हैं। जैसा भी आपने आज आप गए मार्केट से, आपने एक कंप्यूटर सिस्टम खरीदा, लैपटॉप खरीदा या मोबाइल खरीदा और फिर वो सारे के सारे फंक्शन करने लगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ फंक्शंस इनबिल्ट होते हैं जो कि दिए जाते हैं और कुछ को आपको अपने नीड के हिसाब से आपको कहीं से डाउनलोड करने पड़ते हैं। कुछ फ्री होते हैं, कुछ को आपको पे करना पड़ता है। कुछ आप जो चीज़ें आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हैं या आपकी हॉबी से रिलेटेड हैं, वो चीज़ आप अलग से लेते हो और फिर उस पे काम करते हो। तो जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी जो हैं वो अगेन 2 तरह के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक कंप्यूटर का स्पेशल, और एक होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। क्योंकि आप जो चीज़ उस में डालते हो वो उस लैंग्वेज में नहीं होती है जिसको कि कंप्यूटर समझता है, वो किसी और लैंग्वेज में होती है। तो उसको उसको चेंज करना पड़ता है। जैसे कि आप जो भी चीज़ लिखेंगे डायरेक्ट आपने इंग्लिश में टाइप किया, वो रन तो हो जाता है, लेकिन उसके लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी उस कंप्यूटर सिस्टम में है जो कि वो चीज़ समझते हैं जिसमें कि आपने टास्क दिया है। फिर उसको वो चेंज करता है, जो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है, जो उसने अलग से एक फॉर्म लगाया हुआ है, और वो फिर कंप्यूटर को बताता है कि यूजर को ये चीज। इसका माइक ऑन है, आप माइक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि
हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में आगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आता है। और लैंग्वेज प्रोसेसर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि जनरल जो आपके टास्क स्पेसिफिक होते हैं, जो आपके एप्लीकेशन, आपको पर्टिकुलर क्या चाहिए उस स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये भी जनरल पर्पस होते हैं और कस्टमाइज्ड होते हैं। जैसे कि कंपनीज होती है ना, हमने बड़ी बड़ी कंपनी सुनी हुई, कंसल्टेंसी कंपनीज, जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, डेलॉइट है, और बहुत सारी कंपनीज हैं। तो वो क्या करती हैं कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं, सेक्टर्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं, या वैसे भी कोई ऑफिसेस हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पर्टिकुलर चीज करनी है आईसीटी पे बेस्ड, तो फिर वो उनसे वो डिजाइन कराते हैं वो प्रोग्राम्स, तो उसको कहते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन के लिए उसको चाहिए कुछ डेटाबेस, आपको स्टोर करना है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का या कंट्री का या स्टेट का, तो उस तरह से उनको डिजाइन किया जाता है। उसके लिए फिर वो कंपनी उन कंसल्टेंसी फर्म्स को पे करती है, और वो फिर उसका लुक आफ्टर करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इस तरह से आप खरीदो, उसके ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो वो फिर उसको रिजॉल्व करते हैं। तो वो उस तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो now we have two basic classification of software. One is system software, another is application software. So as the name self gives its meaning, system software, it is related to your computer system or mobile system or any laptop or desktop and anyone, depending upon the manufacturer. So they give their own operating system to operate the various functions within the computer system. How to connect input device, output device, how to present the data. So they have their own operating system. Like Linux or Windows or Android or Mac OS and all that. So they are manufacturer specific software to run the computer system. Then there is language processor. This is again a part of the manufacturer unit. They have their own drivers, device drivers, how to drive a particular device for a particular set of instructions. So for that they have types of language processor like interpreter or compiler, like that. They just translate the the language which is given by the programmer, and then accordingly they process the data. They change that language which is written by the programmer, and then they convert it into a certain sequences of zeros and ones, or you can say a digital version of that language, uh, to how to communicate with the device or communicate with the machine or the computer system, you can say more specifically. So for that they have different language processors or language translators. So this is the system software. Now we have application software. Depending upon the application, the how you want the computer to operate as per your need or requirement. For that, there are again two types of software, application software. They are general purpose or customized software. General purpose are those software which are required by each and every individual, whether you are working in a certain profession, or you can say they are user friendly softwares. For these are the some basic you can say software on which you have to work as per your need. Like if you want to, like other we have seen in the examples, if you want to type certain text or document, or you want to make some file, then you need MS Word. And if you want to present your data in a particular tabular form, or some analytical version, or you can say some calculative type of sheet, then you need MS Excel. And if you want to go for a particular, you can say there are some software which we call Tele.
some financial related, you can say, tasks. And if you want to present, your data in a particular, you want to make some presentation to give, your file or a document, you have to present in a particular slide form, then it is a PowerPoint presentation. So certain type of Photoshop, depending upon if it is your hobby or a profession, you need some skill based, you can say, software to modify or to present your photographs or pictures in a particular way, or in a better way, you can say. So for that you need Photoshop, or there are some software which are related to design part, so they are called it CAD, or computer aided design softwares. So these are the softwares, you can say. They are application based software, depending upon a particular individual. Now there are certain customized software which is the demand of a particular, you can say, a company, or a government department, or you can say a organization, whether it is an educational organization or some private organization or some industry. So for that they hire some company to make certain set of software for their requirement, to fulfill their requirement. Now, this is the diagram which shows, or you can say a flow chart, how the set of, this software will communicate with each other. Like from user, it goes to application software, then to the operating system, then this operating system, it communicates with the hardware and the application software, and then hardware will perform the job. Again, it has to given to you as a form of input. So again, it communicate with the operating system. Operating system will go to the application software, and then it is displayed, or you can say uh, the user can see, or can get the output from that task. So systems of, let's see first system software. So system software provides, the basic function for, you can say, the computer usage, you can say, and it helps to run the computer hardware and the other systems. So this type of software directly operates the computer hardware and provides the basic functionality to the user, as well as to the other software also, because through the system software only the application software works. All right. To operate, to make it more and more this operation smoothly, this software has to be very, very efficient. Or in other words, you can say this is the basically, it controls the computer's internal functioning, and also it controls the hardware devices, like your monitor, your keyboard, your printers, or some storage devices. And like that, you can say it's an interface between the hardware and the application, the user applications, you can say. And we have seen in the flow chart, okay, there are two types of the system software. First one is operating system. So this is the main program of of a computer system. When you switch on your computer, so there is a first software that loads the computer from the computer memory, and it manages all the resources. It connects basically the input devices, or the memory, or CPU, or printer, or disk, or whatever the peripheral devices or internal devices first, to prepare them to make certain functions. And then they provide an interface to the user. Suddenly you can't jump into the computer and make the task run. First you have to, you have to open up your screen, and then give some few seconds to, to boot the different programs or load the computer, and then it is again able to perform the job as per your need. So this
interact with the computer system, operating system. Provides various services to the computer software, and examples we have seen, it is actually manufacturer specific software. So different companies opt different type of software, whether they make their own or they buy from some other company. So Linux, Apple OS, Mac OS, which we call microwave, soft Windows or Android, or there are so many other softwares available. तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हमने कहा कि ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम में पहले से ही जो कंपनी है, जिस कंपनी का आपने खरीदा है, वो आपको बना के देती है, अंदर ही उसमें फीड करके देती है, कहना चाहिए। तो जो फंक्शनिंग है कंप्यूटर की, वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी उसने डाला है उस पे वर्क करती है। तो उसमें दो टाइप्स हमने पढ़े, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, और जो दूसरा था वो कौन सा था? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, वेरी करेक्ट। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी जो होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं, कंपाइलर होते हैं। तो जो लैंग्वेज में आप उसको कमांड दे रहे हो, वो पहले मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो मशीन समझती है, आपका कंप्यूटर समझता है कि आपने क्या काम करवाना है उससे। तो इस तरह से जो है दोनों ही चीजें आपको इनबिल्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिक कहना चाहिए कि सॉफ्टवेयर होता है जिसपे कि सारा फंक्शनिंग, चाहे आप कुछ भी करें, आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कहीं भी कुछ भी करना है आपको, थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्रू द ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ही वो फंक्शन करता है। अब सेकेंड जो है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पढ़ा, उसके बाद में है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, या फिर कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स। अब लैंग्वेज प्रोसेसर्स में भी जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में जो है वो लिखते हो आप कोई भी चीज, और उसको फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। और जब मशीन अपना काम कर लेती है, जो आउटपुट उसने प्रोड्यूस कर दिया, तो उस आउटपुट को फिर आपको बताना जो आप समझ सको। ठीक है, तो वाइसे वर्सा। All right, this translators has to translate your language, the language which is friendly to the user or human being, to the machine language which is understandable to your machine or your laptop or your computer, and then the output which a machine gives to you, it is again converted into certain language which you can understand, which you as user can understand. So this conversion is done by language processor. Now, before going further, you just know 3 types of languages, all right? Machine language, assembly language, and high level language that we call HLL. Now, machine language is something, that can understood by the machine only, the computer only. It is a basic of sequence of, zeros and one. So 2 bits we use in digital computers, 0 and 1. So each and every single step, whether it is a symbol, all right, a particular symbol like comma or full stop, this is again converted into some sequences of zeros and 1. So only that machine, that language machine can understand. And for that we have seen some registers and flip-flops. So they are so many in numbers. So each digit, the signal of each digit is given to that particular flip-flop or a particular register. So that not be in much detail, but these series of bits, which is the representation of your instructions, they the computer can understand. So they are entirely a digital operated machine. So this is you can say a machine language or a low level language, or you can say the first generation language. All right. Now the second is assembly language. Sometimes you find this word assembly language. Now assembly language is again a language which is you can say it is slightly in alphanumeric mode, like
it has some numbers, and also some, code words. Like for move, they write MOV. And here the letters should be in a particular order, whether they are in a capital letter or in a small letters, and a particular sequence of digits from 0 to 9 you can use, because it is written by a programmer. So it contains some instructions as machine language, but these instructions, or you can say variables, they have names also, some letters also. So this advantage of this is that the programmer can read it, can write it. So these are certain statements, you can say, but again they are converted into the sequence of zeros and one through some translator, which we call assembler. Now then there is a third kind of language, which is high level language, HLL we call, because nowadays the programmers use this type of language. Earlier we used Fortran, COBOL, BASIC, but nowadays it's C++ or Java and some advanced versions of Java. So this type of language we call HLL, or high level language. And this the statements are easier in the language which are similar to English language mostly. So this is translated again to some sequence of bits. So that is again a digital language, or you can say machine language. So this assembly language programs are translated, has to be translated into the machine language. Then only the functioning can be completed by the computer. So three types of languages. So we have three types of translators. All right, a compiler, interpreter, and assembler. So a compiler is a simple translator which converts the high-level programming language to low-level programming language, or you can say machine language. But what is the difference? It converts whole program in one session. All right, this compiler, what it does, it converts the whole program in high-level language into one go. Like it reads all the programs, and then it reports all the errors within the program, and along with the line number, and then they show those errors. So what a programmer does, programmer just find out the errors, and then it you can say try to remove all those errors, correct it, and then the program is again recompiled, and then this compiler is the function of the compiler is finished at that stage. And then there is interpreter. Interpreter is, the function is same. Interpreter is again a translator which converts high level language into the low level language, and it converts this machine language by by line, you can say. First it reads first line of the program, then it goes to second if there is no error in the first line. Now if there is any error detected in one line, it stops translation. It just flashes that error in that particular line, and it reports to the user or to the programmer at the same time. So the programmer has to amend it, or you can say remove that error, then only the program execution resume. Otherwise it will stuck to that line itself. So first the error is rectified in the first line, then it goes to second, third, and so on. And then there is a assembler. Assembler is again a translator which is used to translate assembly language to the machine language. Assembly language, we have seen. What is the assembly language? It is a second generation language which is based on alphanumeric code. It has some English letters and numbers also, some symbols also.
तो जो लैंग्वेज प्रोसेसर है या लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जैसे कि ऐसे आप समझ सकते हो कि एक जो है इंग्लिश आता है एक को, और एक को सिर्फ हिंदी आता है। तो वो इंग्लिश वाला इंग्लिश में बोल रहा है, हिंदी वाला उसको समझ नहीं पा रहा है, हिंदी वाला हिंदी में बोल रहा है, इंग्लिश वाला नहीं समझ पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे पर्सन को लेके आते हैं जो इंग्लिश भी बोले और हिंदी भी बोले। तो इंग्लिश में जिसने बोला है वो उसको हिंदी में बताएगा, हिंदी वाले ने जो बोला है वो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश वाले को बताएगा। उसी तरह से हमारे सिस्टम में भी जो है एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो कि ट्रांसलेट करता है, क्योंकि किसके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है और होना चाहिए, क्यों जो यूजर है उसके और जो आपका कंप्यूटर है वो। कंप्यूटर को आपकी बात समझ में आनी चाहिए और कंप्यूटर की बात आपको समझ में आनी चाहिए कि वो क्या कह रहा है, क्या चीज आप मांग रहे हो उससे और वो क्या शो कर रहा है, उसमें एक सिंक होना चाहिए कि आप जो काम उससे कराना चाह रहे हो वो समझे और वो उसको करे, और वो उसको उस भाषा में या उस फॉर्म में प्रेजेंट करे जिसमें आप उससे वो आउटपुट चाहते हो। तो उसके लिए ट्रांसलेटर यूज करते हैं हम। कंपाइलर एक होता है, एक इंटरप्रेटर होता है, एक असेंबलर होता है। इससे पहले हम 3 लैंग्वेजेस देख लेते हैं। 3 लैंग्वेजेस जो हैं मतलब कैटेगरी में डाला गया जब से कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ और आज तक, क्योंकि हम हमेशा उसको कुछ बताना चाहते हैं कि भाई आपको ये काम करना है, तो और उसको समझ में आना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। तो जैसे जैसे कंप्यूटर का मशीनरी का डेवलपमेंट हुआ, एनहांसमेंट हुआ, उसी तरह से लैंग्वेज का भी जो है वो इवोल्यूशन हुआ है, उसमें भी बहुत तरह का एडवांसमेंट आया है। तो पहले जो कंप्यूटर समझता है उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद में जो कुछ लैंग्वेजेस आई जिसको हम फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबॉल, ये सब आप समझ सकते हो। तो वो लैंग्वेजेस में क्या होता था कि कुछ टर्म्स होते थे, कुछ वर्ड्स होते थे, पूरा वर्ड नहीं होता था। जैसे कि मूव है तो MOV लिखेंगे, एडिशन है तो उसको ADD लिखेंगे कैपिटल में। उसमें ये भी ध्यान रखना पड़ता था कि कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिखना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, या कहाँ कोई और सिंबल आपको ऐड करना है। तो उस तरह से बहुत पर्टिकुलर वे में उस लैंग्वेज को एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन करता था प्रोग्रामर, और फिर उसको मतलब फीड किया जाता था कंप्यूटर में, और फिर कंप्यूटर वो टास्क जो है वो फुलफिल करता था। तो उसको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। और अब जो यूज हो रही है उसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, HLL जो है कैपिटल फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स जो हैं वो C++ आपने पढ़ा होगा, C++, पाइथन, जावा। यदि आप थोड़ा सा उसके बारे में ध्यान रखते हैं, और नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं है। ये जो लैंग्वेजेस हैं इसमें प्रोग्राम्स जो हैं वो लिखे जाते हैं। तो पर्टिकुलर टास्क के लिए, कुछ एप्लीकेशन के लिए, या कुछ भी चीज़ें आपको कंप्यूटर को समझाना है या उससे कराना है, तो इस तरह की लैंग्वेज में उसको समझाया जाता है एक तरह से। तो 3 तरह के ट्रांसलेटर्स हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर सारे प्रोग्राम को जो एक प्रोग्रामर ने लिखा है उसको एक बार में पढ़ता है, और जितने भी उसमें एरर्स आते हैं वो एक साथ फ्लैश कर देता है कि ये एरर्स हैं, ये आप खत्म करोगे तो जिस पर्पस के लिए आपने वो प्रोग्राम लिखा है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये सब चीजें हम नहीं पढ़ पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे। तो प्रोग्रामर क्या करेगा कि उसको फिर से करेक्ट करेगा, उन एरर्स को रिमूव करेगा, और फिर वो प्रोग्राम जो है वो चलेगा उस पर। इंटरप्रेटर में क्या होता है कि इंटरप्रेटर जो है ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये 1 एट अ टाइम करता है। एक लाइन पढ़ेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो एक लाइन में यदि उसको कहीं वो अटक रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे एरर शो कर देगा। और सेकेंड लाइन तब में वो तब तक रीड नहीं करेगा जब तक कि फर्स्ट लाइन का एरर खत्म नहीं हो जाता है। तो ये थोड़ा सा स्लो है, कंपाइलर जो है वो थोड़ा फास्ट है, क्योंकि एक साथ सारी चीजें आपको बता दी उसने और आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये नहीं पता कि सेकेंड में भी एरर है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी। आप एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करो, फिर देखो और फिर उसको चेंज करो। और असेंबलर क्या होता है, असेंबलर जो है पर्टिकुलरली असेंबली लैंग्वेज के लिए बनाया गया,
कि वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। फिर कुछ डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर्स अगेन अ प्रोग्राम और अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स योर डिवाइसेस, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपने दे दिए, लेकिन इनपुट और आउटपुट के बीच में बहुत सारी सर्किटरी होती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट काम करती है। तो उन सर्किटरी को या फिर उन कहना चाहिए जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं आपके, जैसे ALU है, मेमोरी है, उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए, उनके बीच में एक तरह से एक फ्लो बनाने के लिए जो है डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर्स बेसिकली कंट्रोल्स अ डिवाइस एंड हेल्प्स दैट डिवाइस टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। उसको क्या फंक्शन करना है, क्या काम करना है, कैसे करना है, कहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेना है और कहाँ पर जाकर के उसको अपना जो भी उसने काम कर लिया वो भेजना है। सो एवरी डिवाइस लाइक अ प्रिंटर और अ माउस और अ मॉडेम, they needs a driver to connect with the computer system eternally or internally. So when you connect a new device with your computer, first you need to install that driver, that drive of that device, so that your operating system knows how to control or manage that device. जैसे आपने पेन ड्राइव इंसर्ट किया या एक पर्टिकुलर प्रिंटर इंसर्ट किया, so how to operate that, है ना, उसके बीच में भी एक सिंक होना चाहिए। सो दैट यू नीड अ डिवाइस ड्राइवर। यदि कोई प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर ड्राइव नहीं है आपके पास में, तो आप का जो कंप्यूटर है वो उस प्रिंटर से कनेक्ट नहीं होगा, या फिर उन कंपनीज डिफरेंट कंपनी का है या ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको उसका ड्राइव, एक सॉफ्टवेयर जो है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आप उसको जो है ड्राइव कर सकते हो। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यस मैम इसका मतलब ये है जैसे कि हम कोई घड़ी लेते हैं, आजकल स्मार्ट वॉच चलती है, तो उसको हम लेते हैं तो अपने फोन में उसका जो एक ऐप है उसको डाउनलोड इंस्टॉल हाँ, करते हैं, तब वो वर्क करता है। इसी चीज को बता रहे हैं आप ये? हाँ, इसी चीज को वो बेसिकली क्या है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही है, वो सॉफ्टवेयर ही है एक तरह से, जो एक तरह से एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करता है। एक दूसरे से वो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं ना एक दूसरे से, या आउटपुट आप उससे उसको दे रहे हो तो वो पहला डिवाइस समझ सकता है, पहले डिवाइस को कुछ दे रहे हो फंक्शन, तो वो दूसरे को ऑपरेट कर सकता है इस तरह से। ठीक है। ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कि वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड होते हैं, कि आपको क्या परफॉर्म करना है। जैसे जॉब है आपका एक्सेल शीट बनाने का, या कुछ कहना चाहिए कुछ कंपेयर करने का ना, बहुत सारे डेटा हैं आप कंपेयर करना चाहते हो, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर शीट चाहिए, एक पर्टिकुलर टेबल चाहिए, या प्रेजेंटेशन बना रहे हो, या कोई एक डेटाबेस मैनेज करना है आपको, जिसको DBMS बोलते हैं, तो वो चीज आपको करनी है, तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है वो चाहिए। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें स्टूडेंट्स के का डेटाबेस उनको मतलब बनाना है, कि एक स्टूडेंट का मतलब क्या उसका नाम है, क्या उसका रोल नंबर है, वो कब उसने एडमिशन लिया, उसका रोल नंबर क्या है, उसने फीस दी कि नहीं दी, क्या उसने उसका जो कहना चाहिए एग्जाम्स में उसका क्या रहा, उसने वो पास किया कि नहीं, या नहीं किया तो उसमें कहाँ कहाँ वो मतलब फेल हुआ या सक्सेस नहीं हो रहा, या फिर कोई स्पोर्ट्स का डेटा आपको मैनेज करना है, तो उस पूरे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए। कुछ कंपनीज को स्प्रेडशीट्स बनानी होती हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें उसमें रखनी होती है, इन्वेंट्रीज बनानी होती है ना, या जो एम्प्लॉयज हैं उनको पे रोल उनका प्रोग्राम्स होता है, मतलब एक पूरा डेटाबेस चाहिए कि भाई किस एम्प्लॉय का कितना, क्या उसका ज्वाइनिंग डेट है, क्या उसकी एज है, क्या उसका काम है, क्या उसकी सैलरी है। तो इस तरह से बहुत सारे काम होते हैं जो कि टास्क स्पेसिफिक होते हैं, तो उसके लिए वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। So the software that perform a special function and provides
a special, you can say, a data or a output, which is much more than basic operation. So that is the application software. So they are designed to perform a specific task for the end user. And it is a product or a program that is designed only to fulfill the end user's requirement. So such are the examples. Now, features of application software is all that we have discussed till now. It depends. Some user doesn't want any, the word because he or she doesn't want to make any document or a file, or so they don't need word processing unit. And somebody wants to work in Word but doesn't want any Excel sheet or a spreadsheet or PowerPoint presentation, then it doesn't need, he or she doesn't need that Excel, some software, for the Excel sheet or spreadsheet. So, like for one major application is email. Email generally used by everyone. Everyone has that email ID, because to communicate with others or other organization, or with some other than you, if you want to send some file or image or anything using this email. So this is having a a task specific software, application software. So the size of this software is big, and it requires some storage space, of course, and it is more interactive for the user. It makes the job easy if they use a particular type of software for design purpose, or for as per their need or requirement. So this is again written in a high level language in general. Then types of general software, we have seen general purpose and customized software. For the general people, for the general, you can say, employee, these type of software which we just discussed is enough. But for customized software, it is needed by some organization, big government sector, or banks, or railways, or you can say airport authorities, or airline reservation system, or their own to maintain or manage their own system. They need some customized software, which they bought, or from some, they hire some consultancy company, and ask them to design as per their requirement. And there are third type of software, which is again a very important one, that we call utility software. Now, utility software are some software which support the computer infrastructure. See, you have made a system of hardware and software, but to manage that system, to manage the software part as well as hardware part, you need some type of management, to some type of, you can say, the protection unit. So like if you buy some vehicle, or some gadget, you place some safety guard over it, whether it is your vehicle or your mobile phone. You put some screen and something to protect that. So similarly, you have to protect your internal devices or internal software, which are something which is to be, which needs security, because you cannot make it public, right? So for that, you need certain type of software which is designed to analyze, to configure, to optimize, and maintain the system, and take care of its requirement as well. So they are like antivirus, or disk fragmenter, and memory tester, disk repair, or disk cleaner, or registers. There are various registers, small registers, to make the software to run smoothly.
So the cleaning is required, all right? So this space analyzer, so some type of software should be there, which you have to, some softwares are available in the open market. You can just download and they'll do their job. And sometimes you have to purchase. So there are certain differences between the system software and application software. System software, they are designed to manage the resources of the computer system like memory and process system, etc. And application software, they have to fulfill the requirement of the user to perform a specific task. तो इसके अलावा जो है, जो हमने ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा, जनरल पर्पस और कस्टमाइज, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जनरल पर्पस जो है वो जनरली लोग यूज करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर भी आपको कई बार डाउनलोड करना पड़ता है, कुछ फ्री होते हैं, किसी को आपको खरीदना पड़ता है। कस्टमाइज्ड वो होते हैं जो आपकी कंपनी परचेज करती है, या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो अपने नीड के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से बड़ी बड़ी कंपनीज को हायर करते हैं कि वो उनके लिए जो है ऐसे प्रोग्राम्स लिखें ताकि वो ये काम, पर्टिकुलर काम कर सकें। जैसे रिजर्वेशन करवाना है आपको, तो एक पर्टिकुलर आपको वेबसाइट बनवानी है या रिजर्वेशन का एक पोर्टल बनवाना है, तो आप एक कंपनी को हायर करते हैं जो यही सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। उनके जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं, वो प्रोजेक्ट उनको दिया जाता है, वो प्रोजेक्ट को फिर वो उस पे काम करते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको जो है वो एक तरह से खरीदते हैं वो उस सर्विसेज को, और कस्टमाइज कराते हैं, अपने हिसाब से डिज़ाइन कराते हैं, तो उनको अच्छे से पे करते हैं, और वो सिस्टम को फिर वो जो सॉफ्टवेयर है या जो भी चीज़ वो देते हैं उसको फिर वो मैनेज भी करते हैं। यदि कहीं कोई दिक्कत आती है, एरर आती है, परेशानी आती है, कई बार स्टक हो जाता है सिस्टम, तो वो सारी चीज़ें जो है वो टेक केयर करते हैं, वो कंसल्टेंसी टेक केयर करती है। तो हम अब डिफरेंसेस के, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी ऐसे होते हैं जो कि आपके सिस्टम को सही तरीके से काम वो कर सके, उसके लिए जो है सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं। जैसे कि आपका जो हार्ड डिस्क मैनेजमेंट है, या कहीं कोई क्लीनिंग करना है, जैसे आप हर जो चीज़ नहीं चाहिए उसको आप बिन में पटक देते हो, उसके बाद में फिर आपको बिन को भी जो है वो क्लीन करना पड़ता है, स्वाइप करना होता है, ताकि आपकी मेमोरी जो है वो मतलब कि अननेसेसरी चीज़ों से भरी हुई ना रहे, है ना। मेमोरी जो है आपकी, वो जो चीज़ यूज़फुल है उनसे आप उसको उसमें स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह से जो एक बहुत तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, जो जिस हिसाब से आपको ज़रूरत है आप उसको ले सकते हो। कुछ फ्री होते हैं, कुछ आप परचेज करते हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि सिस्टम को मैनेज करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी रिसोर्सेज हैं, आपकी मेमोरी यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको मैनेज करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो जो भी आपके जो पर्टिकुलर टास्क हैं उनसे रिलेटेड जो भी कहना चाहिए कि सॉफ्टवेयर है, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक तरह से ऐसे ही इन्होंने मेन पॉइंट्स को लिखा है। तो जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो मशीन लैंग्वेज में है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में है, ये लेस इंटरेक्टिव है, यूजर्स को से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आप उससे डायरेक्टली जो है आपके कमांड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तक जाते हैं, और वो आप टास्क स्पेसिफिक है क्योंकि, तो आप खुद ही अपने सिस्टम में डालते हो जो भी आपको ज़रूरत है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो एक सिस्टम को फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो जो आप टास्क कराना चाहते हो, जो भी एप्लीकेशन आप उससे चाहते हो, जो भी आपका कहना चाहिए कि जो भी चीज़ें आप एक सिस्टम से करवाना चाहते हो वो टास्क स्पेसिफिक हो गया, तो वो फंक्शनिंग जो है वो उस टास्क से रिलेटेड है, मशीन से रिलेटेड नहीं। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे
उनको ज़रूरत पड़ती है कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो इसको रन करेगा। और ये यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर हैं इसके भी एग्जांपल्स देखो यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि आप अपने सिस्टम को सिक्योर करना चाहते हो तो आप लॉक सिस्टम यूज करते हो। कौन सा लॉक यूज करते हो? नंबर्स का करते हो या बायोमेट्रिक करते हो, तो उसके भी अलग सॉफ्टवेयर हैं। उसी तरह से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप डालते हो ताकि कोई दूसरा ऐसा प्रोग्राम ना आ जाए आपके यहाँ पे जो कि आपके पूरे सिस्टम के जो भी प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसको करप्ट ना कर दे। तो उसके लिए भी यू नीड सेपरेट सॉफ्टवेयर। फिर अपडेट्स के लिए भी सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि आपके सिस्टम को अपडेट करते रहते हैं जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर जो है कंपनी लॉन्च करती है तब। उसी तरह से क्लीन अप के लिए यू नीड अ सॉफ्टवेयर। फिर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, मतलब कि आप इनकोड करते हैं कुछ चीज़ों को, आप प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो? घर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लॉक लगाते हो। लॉक भी अलग अलग तरह के लगाते हो ताकि कोई भी बाहर का आदमी अंदर ना आ सके। उसी तरह से आपका जो डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए इसको इनक्रिप्ट किया जाता है, उसको एक पर्टिकुलर कोडेड फॉर्म में रखा जाता है ताकि कोई और उसे ना पढ़ सके, ना जान सके। फिर डिफरेंट फॉर्मेटिंग भी होती है, उसके भी सॉफ्टवेयर आते हैं फॉर्मेट करने के लिए पूरे सिस्टम को। सो लाइक दैट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स which are they also perform a certain task like virus detection or installation of a particular website or a software, and then uninstallation. If you doesn't want anything, you can remove it from your system or from your mobile. Then data backup, or deletion of some file or storage of some file. All right, some antivirus softwares and file management tools. Some compression tools are also is there to compress your file, so that the storage capacity of the memory can be used more. And some disk management tools and so on. And one software, it is here it is mentioning that bootstrapping. Bootstrapping is some set of instructions when you start your computer system. So some set of software they run first, and then they make the every device, and they generally, you can say, they wake up every device and every system ki, okay, just wake up, now we have to ready to function, right? It's our day has begun, and now we have to proceed throughout the day how to uh, start our afresh, to you can say make the task to be done as some task is given by the user. So that is called post. Post is like power on self test, so they do it self by itself to just switch on. Now you put your system to electrical charger or something like that, then they just power on, and then this power on makes the each and every device of your system to start functioning. Like if you switch your mobile phone to a charger, to a plug, and switch on the plug, then they start charging, and then they start functioning by itself. Some program runs in the system. So they check the configuration for the device, whether it is perfect for functioning or not. It is a routine testing for for the connection of all the peripheral devices of a computer system, then hardware, software, everything. So that is the bootloader or bootstrap program to initialize the operating system. I think that much is enough for today. If you have any problem, you can ask.